Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel, Chemistry with GS. And students, today we will we will explain, I will teach you Solvay process. Solvay process में बहुत ज़्यादा important है. So today's topic is Solvay's process. Solvay process is used to manufacture sodium carbonate. And किस लिए यूज होता है? सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं in the industry, right? Sodium carbonate, you know its chemical formula is Na2CO3, and you can call it soda, or it's called soda भी कह सकते हैं. You can call it soda. And this soda, sodium carbonate, is used in the manufacturing of detergents, and the manufacturing of detergents, and the manufacturing of glass, and the manufacturing of paper. So it is used by a process called Solvay. Solvay was the name of the person who discovered this process. Now the main steps of the process. Main steps of the process. The main steps of the process are: one, brine, preparation of brine solution. Preparation of brine. What is brine? It means concentrated, highly concentrated solution of highly concentrated solution of NaCl. This is known as brine, right? Then steps number two is it is used to manufacture of what? Preparation of ammonical brine. Preparation of ammonical brine. Preparation of ammonical brine is ammonia is absorbed in the brine solution. In this, NH3 is absorbed in brine solution. Brine solution, right? The next step is carbonation. The next step is the carbonation tower, right? So carbonation means passing of carbon dioxide. Next step. Step number almost 3. Carbonation. In carbonation, here, in carbonating tower, or it is also called Solvay tower, Solvay's tower,
You can say reaction, chamber or tower. CO2 is absorbed, CO2 is passed, right? And the following reaction the following reaction is occurred, this happens or took place. The following reaction takes place, right? Reactions are NH3 plus bucket, NaCl plus water, right? So this form what? And you see plus CO2. Here, there is no reaction up to here. When you pass carbon dioxide to this mixture, that produces two products. One is NH4 Cl plus NaHCO3, NaHCO3. It is in the liquid state and it is in the solid state. Now it is called soda or baking soda. Then the next step is filtration. During filtration, NaHCO3 is separated from liquid NH4Cl, NH4Cl, right? Now, the next step is by preparation of CO2 and slaked lime. Here, carbon dioxide is produced by heating calcium carbonate. The sign stands for heating. So it produces quicklime plus CO2. CO2 is used in the carbonating tower. Now, preparation of slaked lime. Preparation of slaked lime. When water is added to quicklime, this is called quicklime, right? So it produces what? Slaked lime. You know, slaked lime is used for what? In our daily life, slaked lime is used for whitewashing. It is used for whitewashing. So, slaked lime is produced. Now, the next step is
Recovery of ammonia. Recovery of ammonia. So ammonia is recovered because NH4 Cl is ammonia. When it is reacted with lime water. This is lime water to produce ammonia, NH3. So NH4 Cl plus Ca and OH twice gives 2NH3 plus CaCl2 plus 2H2O. So these were the main steps of solid process. Now comes towards the flow sheet chart, flow sheet diagram. The flow sheet diagram, the first step is raw means preparation of brine. These are the raw materials. Means brine. So this is the flow sheet diagram. This is ammonia.
ammonium brine, then the next step is carbonation tower. This is called carbonation tower. थोड़ा सा मुश्किल है काफी, ये पेन जो है वो स्लिप हो जाता है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कार्बोनेशन टावर, carbonation tower. Then carbonation tower. The next is here. CO2 CO2 is formed by what? Is formed by decomposition of calcium carbonate. CaCO3, CaCO3. CaCO3 say when it decomposes and produces what? CaO. CaO. CaO produced what? Water is added, produce Ca and OH twice. So Ca and to OH
or twice is produced, and it is taken to ammonia recovery. Okay. So here, two products are produced, NH4Cl and NaHCO3. When it is heated, it produces further two more product, which is called Na2CO3 and CO2. Here, this is taken into ammonia recovery tower. Ammonia recovery tower. An ammonia recovery tower, when it reacts with Ca, lime water here, when it reacts with this, produces two products. One is NH3, the other one is CaCl2. CaCl2 is discarded, right? Then ammonia is taken here, is bring from here ammonia. It's very difficult to draw on this one. So ammonia will either leak out. Now, this was the flow sheet diagram. Now, we will come towards the main reaction. Main reactions, right? So the main reactions are CO, CO2 plus NH3 plus H2O. So this produces what? Look at this is NH3, this is HOH. Water is HOH. One hydrogen is give one hydrogen to this one, so this will produce NH4. Then C, oxygen here 2 and 1 NH and 1 is here. So this will produce HCO3. Then HCO3 reacts with NaCl. NH4HCO3 reacts with NaCl to produce NH4Cl. NH4Cl plus NaHCO3. Then NaHCO3 is heated to produce Na2CO3. Preparation of NaCaCO3, how we can produce carbon dioxide, so this produce with lime plus CO2, quick lime reacts with water to produce what? To produce lime water. This is lime water. Then ammonia is recovered. Reaction for recovery of ammonia is lime water. This produce what? Cl2 plus 2NH3 plus 2 H2O. So these were the main reactions of solid process. Right now,
This is very, very important. Very, very important. Advantages of solid process. What are the advantages of solid process? Mostly it comes in short questions. Solid process. The advantages are it is a very cheap process. One, it is very cheap. It is very cheap process, right? Number two, the raw materials are very cheap because it is very cheap process because the raw materials are very cheap. Number two, it is pollution free. Because no harmful products are found. Because no harmful product is found. No harmful products are found, right? Three, it is a continuous process. Means most of the materials are recovered. Continuous process. And it releases pure Na to CO3. So these were the advantages of solid process. Now I will explain in Urdu. इसी में solid process हम यूज करते हैं, इससे बन जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है. ये कहाँ यूज होता है? ये डिटर्जेंट्स बनाने में यूज होता है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है. इस प्रोसेस के जो मेन स्टेप्स हैं वो ये है कि फर्स्ट स्टेप इसका जो है प्रिपरेशन ऑफ ब्राइन. ब्राइन क्या होता है? हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन सोल्यूशन. वाटर लेके NaCl बहुत ज़्यादा डालते हैं, सोल्यूशन बनता है ब्राइन. फिर जो है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन. अमोनिकल ब्राइन ये है कि इस सोल्यूशन से हम क्या पास करते हैं? अमोनिया पास करते हैं. नेक्स्ट स्टेप जो है कार्बोनेशन. कार्बोनेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और ये होता है कार्बोनेटिंग टावर में. और इसको सॉल्वेट टावर भी कह सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इसको रिएक्शन चैम्बर भी कह सकते हैं. यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है. तो NH3 प्लस NaCl प्लस H2O प्लस CO2 जो मेन रिएक्शन होता है तो वी गेट टू प्रोडक्ट्स. NH4Cl जो लिक्विड फॉर्म में होता है और NaHCO3 जो सॉलिड फॉर्म में होता है. तो इसके हम फिल्ट्रेशन करते हैं. फिल्ट्रेशन से क्या होता है? सॉलिड अलग हो जाता है, लिक्विड अलग हो जाता है. तो सॉलिड जो है NaHCO3 है और लिक्विड जो है NH4Cl है, राइट. देन नेक्स्ट स्टेप जो है कार्बन डाइऑक्साइड हम जो कार्बोनेटिंग टावर में यूज करते हैं. फ्रॉम हियर वी गेट कैन गेट कैल्शियम कार्बोनेट. इसके डिकम्पोजिशन करके हीट करते हैं अराउंड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड और बनता है क्विक लाइन प्लस CO2. The next step, CO2, you see a quicklime is converted into lime water. Quicklime है, right? पाकिस्तान में देखा होगा.
इसकी जो है वाटर डालते तो इससे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, तो लाइम वाटर बनता है। लाइम वाटर यूज होता है फॉर द रिकवरी ऑफ अमोनिया। तो recovery of mononuclear reaction NH4Cl plus Ca(NO) twice gives to NH3 plus CaCl2 plus 2H2O. Now, फ्लो शीट डायग्राम ये है कि अम्पाइन है और अमोनिया, ये रॉ मटेरियल है, इसको लेके जाते हैं अमोनिकल, अमोनिकल ब्राइन बनाते हैं, फिर इसको लेके जाते हैं कार्बोनेशन टावर में, इसको सॉल्वेट टावर भी कह सकते हैं, राइट, सॉल्वेट टावर भी कह सकते हैं। तो इसमें जो है ये कार्बोनेशन टावर और सॉल्वेट टावर, ठीक है। तो इसमें ये एरो यहाँ पे है। ये पेपर पे स्टक हो जाता है, पेन जो है वैसे, ठीक है ना। तो जब रिएक्शन होते हैं वी गेट टू प्रोडक्ट्स NH4Cl NaHCO3, NaHCO3 हीट कर इट इज हीटेड टू गेट Na2CO3 और क्या बन जाता है CO2। CO2 जो है यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। NH4Cl के साथ क्या हो जाता है, लाइम वाटर ऐड करते हैं तो CaCl2 बन जाता है और NH3 बन जाता है। CaCl2 जो यहाँ नीचे है वो डिस्कार्ड हो जाते हैं पेन लेके, और NH3 हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, हम रीयूज करते हैं। तो ये था फ्लो डायग्राम ऑफ सॉलिड प्रोसेस का। नाउ द मेन रिएक्शन ये है कि CO2 प्लस NH3 प्लस H2 क्या बन जाते हैं NH4 HCO3, और NaHCO3 ये रिएक्ट हो जाता है किसके साथ, क्या बन जाता है, ये देखो तो NH4, ये NaCl, तो ये बन जाते हैं NH4Cl, ये दो प्रोडक्ट बन जाते हैं बेसिकली। जब ये रिएक्ट करते हैं CO2 प्लस NH3 प्लस H2, तो क्या बन NH4Cl। तो अच्छा, जब ये रिएक्ट कर जाते हैं तो NH4Cl प्लस NaHCO3, NaHCO3 को हम हीट करते हैं तो Na2CO3 बनता है। CaCO3 जो है ये मेन रिएक्शन है, CO बनता है प्लस CO2 बनता है, CO वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो लाइम वाटर बनता है, वही लाइम वाटर जो है अमोनियम क्लोराइड के साथ मिलकर क्या बनता है, क्विक लाइम अमोनिया एंड डेस्ट्रॉन, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है, ये बहुत चीप प्रोसेस है, ज़्यादातर रॉ मटेरियल्स चीप है, इट इज़ पोल्यूशन फ्री है, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं बनता क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो है हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ज़्यादातर जो है मटेरियल्स वापस आने बन जाते हैं और प्योर Na2CO3 बन जाता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आप ऐसा करें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को अप टू डेट वीडियोस मिलती रहे, ठीक है, और शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल, थैंक्स फॉर टेकिंग योर टाइम।